human male reproductive system. So the question number 1 is cryptorchidism. Cryptorchidism is a condition in men. Cryptorchidism एक condition है ह्यूमन में, मेल में, जब there are 2 testes in each scrotum. हर एक scrotum में 2 testes होती हैं. Testes do not descend into the scrotum. Testes जो हैं scrotum में नहीं आती, या testes large हो जाती हैं scrotum में, या testes जो हैं degenerate हो जाती हैं. So the right answer is testes does not या do not descend in the scrotum. So the next question is, in human the unpaired male reproductive structure is, ह्यूमन में अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन बी प्रोस्टेट, ऑप्शन सी बर्बोरेथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन डी टेस्टिस, ऑप्शन ई. So बेटा the right answer is option B, prostate. So there is some type of cells present in seminiferous known as the Sertoli cells. These are कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जिनको सेटोलाई सेल्स कहा जाता है. ये क्या है? ऑप्शन ए जर्मिनल सेल्स, ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऑप्शन सी सोमेटिक सेल्स, ऑप्शन डी प्रोटेक्टिव सेल्स. सो बेटा राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोटेक्टिव सेल्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज सम कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड एक्सटेंडिंग बिटवीन द टेस्टिस एंड एब्डोमिनल वॉल कॉर्ड. कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो पाए जाते हैं कहाँ पे? टेस्टिस और एब्डोमिनल वॉल के बीच में. सो द ऑप्शंस आर टेस्टिक कॉर्ड्स, ऑप्शन बी ग्यूबेनर्कुलम, ऑप्शन सी मेसेंटेरिक कॉर्ड, ऑप्शन डी स्पर्मेटिक कॉर्ड. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्पर्मेटिक कॉर्ड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इलास्टिक टिश्यू कनेक्टिंग द कॉर्डा एपिडिडाइमस टू द स्क्रोटल सैक इज. हमारे जो है इलास्टिक कनेक्टिव एपिडाइमस को स्क्रोटल सैक से कनेक्ट करते हैं. सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए गबरिकुलम, ऑप्शन बी टेंडियस, ऑप्शन बी टेंडिनस कॉर्ड, ऑप्शन सी स्क्रोटल लिगामेंट्स, ऑप्शन डी कैपट एपिडिडाइमस. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए gubernaculum. So the next question is, the seminiferous tubule of the testes are lined by the germinal epithelial consisting of. Options are cells of Sertoli, option B spermatocytes, option C spermatogonium, option D spermatid. So the right answer is cells. So the next question is, spermatogenesis is promoted by. स्पर्मेटोजेनेसिस किसके थ्रू प्रोमोट होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोगेस्ट्रॉन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन टिश्यू ऑफ द टेस्टिस. एंडोक्राइन टिश्यू कौन सा है टेस्टिस का? ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल सेल्स और सेल्स ऑफ द लेडिक्स, ऑप्शन बी सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, option C cells of Sertoli secondary spermatocytes. So beta the right answer is option A intercell cells or cells of lattice. So the next question is, if the vas deferens of a man is surgically disconnected. अगर ह्यूमन की जो है मेल की वास डेफरेंस जो है इसको सर्जिकली डिस्कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए sperms in the semen will be without nuclei, option B semen will be without sperms, option C spermatogenesis will not occur, option D sperms in the semen will be non-motile. So the right answer is option B semen will be without new sperms. So the next question is, capsule enclosing testes of the mammal is called as. कैप्सूल जो इनक्लोज करता है मैमल के टेस्टिस को, इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, ऑप्शन बी ट्यूनिका मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी ट्यूनिका वेजिनेलिस, ऑप्शन डी ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा.
So the right answer is option A, tunica albuginea. So the next question is the abdominal passage which connects abdominal cavity with the scrotal sac is known as option A, suprametic canal, option B, neuronteric canal, option C, inguinal canal, option D, Haverian canal. So it is the right answer, option C, inguinal canal. So the next question is sperm cells are produced in option A, seminiferous tubule, option B, interstitial cells, option C, epididymis, option D, prostate gland. So the right answer is option A, seminiferous tubule. So the next question is gland, accessory genital gland occurs only in mammal. Option A, prostate gland, option B, perineal gland, and option D, Bartholin gland. So the right answer is option C, Copper's gland. So the next question is testicular degeneration and other disorders of the reproductive system in mammals are due to the deficiency of dash. Option A, vitamin A, option B, vitamin B, option C, vitamin K, option D, vitamin E. So the right answer is option D, vitamin E. So the next question is Copper's gland is present in option A, cockroach, option B, rabbit, option C, earthworm, option D, frog. So the right answer is option B, rabbit. So the next question is seminal plasma in human is rich in option A, fructose, calcium, certain enzymes, option B, fructose and calcium but has no enzyme, option C, glucose and certain enzymes but has no calcium, option D, fructose and certain enzymes but poor in calcium. So the right answer is option A. Next question is Sertoli cells are found in testes are Sertoli cells जो testes में पाए जाते हैं क्या होते हैं? ऑप्शन ए नर्व सेल्स, ऑप्शन बी reproductive cells, option C receptor cells, option D none of these. So the right answer is option A, nurse cell. So the next question is which of the following represent a condition where the motility of sperm is highly reduced? Option A, oligospermia, option B, anthospermia, option C, azoospermia, option D, polyspermia. So the right answer is option B, athenospermia. So the next question is secretion from one of the following is rich in fructose, calcium and some enzymes. Option A, male accessory glands, option B, liver, option C, pancreas, option D, salivary glands. So the right answer is option A, male accessory gland. So the next question is the correct sequence of spermatogenetic stage leading to the formation of sperm in a mature human testes is correct sequence कौन सा है जिसमें sperm cells बनते हैं? So the options are option A हमारे पास जो है बेटा spermatocytes, spermatogonia, spermatid sperms. Option B spermatogonia, spermatocytes, spermatid sperms. Option C spermatids, spermatocytes, spermatogonia sperms. Option D spermatogonia, spermatids, spermatocytes or sperms. So the right answer is option D. The right answer is option B, spermatogonia, spermatids and sperms. So the next question is in human at the end of the first meiotic division the male germ cells differentiate into option A spermatids, option B spermatogonia, option C primary spermatocytes, option D secondary spermatocytes. So the right spermatocytes. So the next question is which of the following statement is false in respect of mammal sperms? Option A, sperm is viable for only 24 hours. Option B, survival of sperm depends on the pH of medium and is more active in alkaline medium. Option C, viability of sperm is determined by its mobility. Option D, sperms must be concentrated in a thick suspension. So option D is the right answer. So the next question is microsome of cells
option B DNA, option C mitochondria, option D fructose. So the right answer is option A. So the next question is human sperm cells can move by option A cilia, option B flagella, option C basal body, option D nucleosome. So the right answer is option B. So the next question is testes in human are situated outside the body, outside the abdominal cavity, inside a pouch called scrotum. The purpose served as, जो ह्यूमन टेस्टिस हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं पाउच में जिसको स्क्रोटम कहा जाता है. इसका मकसद क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स फॉर एक्सबाइटिंग द मेल सेक्स, ऑप्शन बी मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी escaping only possible compression of the visceral organ, option D providing more space for the growth of epididymis. So beta the right answer is option B maintaining the scrotal temperature lower than internal body temperature. So the next question is heterogametic male does not occur in option A birds, option B human, option C Drosophila, option D honeybee. So beta the right answer is option A birds. So the next question is in the absence of acrosome the sperms cannot penetrate the eggs, cannot get energy, cannot get food, cannot swim. So the right answer is option A cannot penetrate the eggs. So the next question is the cytolized cells are regulated by the pituitary hormone known as option A prolactin, option B LH, option C FSH, option D GH. So the right answer is FSH. Testes in rabbits are inside the body, outside on the sides of the kidney, in the scrotal sac, or on the either side of the dorsal aorta. So the right answer is option C. So the next and the last question is the supporting cells found in between the germinal epithelial of the testes are called option A interstitial cells of Leydig, option B Sertoli cells, option D, option C granular cells, option D phagocytes. Where the right answer is option B Sertoli cells. तो बेटे आज के हमारे जो हैं 30 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इधर कंप्लीट होते हैं. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा.